Gopijanavallabha Girivaradhari Gopijanavallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajana Randana Yasodhanandana Brajajana Randana Yamuna Tiro Manatradhi Yamuna Tiro Manatradhi Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Jaya Musva Paramahansa Paribhajagacharya Sthare Srimad Bhagavatam Saraswati Goswami Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava ki Jai Navacharya Sri Haridas Thakur ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gauri Bhaktamani ki Jai Sri Radha Krishna Gopinath Sam Khand Radha Khand Girivan ki Jai Vrindavan Dham ki Jai Navadvip Dham ki Jai गंगा माई की जाए जमुना माई की जाए गुरु द्वारका धाम की जाए स्वामी भक्तवृंद की जाए ऑल ग्लोरी टू गॉड ऑल ग्लोरी टू गॉड थैंक यू वेरी मच The following is a class on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text number 48, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on 14th June, 1973 in Mayapur. The following is a class on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text number 48, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on 14th June, 1973 in Mayapur. This full hall will have been compact. This is the difference between India and foreign countries. They are receiving this message of Krishna consciousness very seriously. Here they are rejecting. The Indians, they are rejecting. There is a proverb, আপন ধন বিলায়ে দিয়ে ভিক্ষা মাগে পরের কাছে. They have lost their own culture and they are now beggars. They are going to beg from door to door in the foreign countries. When I was speaking in Berkeley University, sometimes in the year 1966, one Indian student stood up and he said, Swamiji, what this Krishna consciousness movement will do
we require now technology. So I replied, yes, you are after technology, so you are a beggar. I am not a beggar. I have come here to give something. That is the difference. I have come here to give some culture, and you have come to imitate the Western civilization by technology. That is the difference. You will remain a beggar, I shall remain a giver. That is the difference. So still I am maintaining that position of giving, not taking. Before me, so many Swamiji went there. They did not give, but they took something and came here and advertised themselves as foreign returned sannyasi and exploited the people. They lost even their original dress. Everyone knows I have never changed my dress. Rather, I have given the dress to the foreigners and they have taken it. The Ramakrishna Mission people came to request me that I dress myself in coat, pant, hat. Because they are so-called Swamis, they are dressed in coat, pant, hat. So, this is a culture. This culture is meant for the human society. Fortunately, this culture developed on this land of Bharatvarsha. Unfortunately, the people are so much bewildered that they are giving up this culture. That is the most regrettable portion of our movement. Anyway, my mission was that I shall go to America, and if some of the American boys and girls, younger section, would accept it, then I'll bring them here to show these rascals that how great this culture is. So, portion of the population they are realizing now. Now here is a word, Gandharing cha tapassini. Gandhari, the wife of Dhritarashtra, he is qualified here with as tapassini. Tapassini. She was a householder, wife, having children, not only one children, she had 100 sons. But still she is addressed here as tapassini. Tapassini means one who undergoes austerity. Because this human life is meant for practicing austerity. Human life is not meant for extravagance. Tapasya, tapo divyam, jina, suddhit satya. This is the principle.
of human civilization. Siddhita Satya, existence. Our existence, we are eternal. Every living entity is eternal. But we are subjected to birth and death. Why? Because we are not pure. Just like when you are impure, some disease infects. If you are pure, follow the hygienic principle, you will not be infected. Similarly, this existence, material existence, we, every one of us, part and parcel of Krishna originally, the same purity, qualitatively. The Krishna is the supreme pure, we are also pure, because we are part and parcel of Krishna. Just like a small particle of gold is also gold. The value is gold. It is not iron or something low-grade metal. The same. Similarly, as Krishna, ajopi san abhyatma, in the Bhagavad Gita it is said, Krishna is aja. He never takes birth. Bhutanam Isharopi san, although he is the Lord of all living entities, still by his desire he appears. Our appearance in this material world is also the same desire, but that is not independent. Our desire, who is talking there, he must talk. That portion is simply talking camp. Just like these frogs or toads are talking whole day and night, kokoroko, kokoroko. Actually, we have got tongues, and these frogs, they have got also tongue. So, they are using their tongue, kokoroko, inviting snakes. Please come here and eat me. That is their business. Nature's way. See, if we simply talk like the frogs without any Krishna Katha, then we are inviting death very soon. So don't waste your time, kokoroko. That is my request. It is our habit, because we are no better than frogs also. We are also living entity. But we have got the chance to stop this kokoroko and chant Hare Krishna. This chance we have got. The frogs, they haven't got that chance. They cannot chant Hare Krishna. That is the difference between the frog and us. So similarly, if we waste our time in that kokoroko, then we are no better than the frog. We are no better than the frogs. So don't make kokoroko when you assemble together. That is my request. If you have got time, spare time, simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. That should be your business. This is tapasya. Tendency is to crow, to make vibration like this,
frogs. That is our tendency, because we are also conditioned soul. And the frogs or any animal, they are also conditioned soul, conditioned by the material nature. Therefore, tapasya, austerity, is required to nullify, to counteract this conditional state of living. Now you are conditioned, janma mrityu jara vyadhi, dukkha doshanudarshanam. We are conditioned by these four principles: birth, death, old age and disease. This is our condition. The scientists, rascals, they are trying to improve the condition of living. But what is the improvement? There is death, there is birth, there is old age, and there is disease. No improvement. If you want to improve your condition, if you want to come back to original constitutional position, then tapasya, then you require to undergo austerity. Tapo dibbam jina suddhita satya jato brahma saukham anantam. If you undergo tapasya, therefore we prescribe this tapasya, no illicit sex. Our tendency is to have illicit sex. That is the condition of this material nature. But we have to deny it. That is tapasya. Tendency is there. Tapasya means I have got some tendency, but voluntarily I have to check it. That is called control, tapasya. My tongue is dictating, oh, let us go to some place and eat such and such thing. But if you can control the tongue, no, that is tapasya. No, you cannot eat this. You cannot be allowed to eat anything except Krishna Prasada. That is tapasya. Not that my tongue has dried up, I must drink a cup of tea and I take it. No, it is intoxication, prohibited. So I shall not take it. That is tapasya. And that tapasya, what for? Tapasya dibbam, tapo dibbam. Otherwise, there are many men, they are also undergoing austerities for some material purpose. There are many men who wants to accumulate some money, begins business from low standard, works very hard day and night. In your country there are many examples, just like Mr. Henry Ford. So, that is also tapasya. They underwent severe conditions of life to accumulate some money. After death or at the end of life, they will be called, oh, here is a millionaire. He started his business with a farthing. Now he wants that credit. No, not that kind of tapasya. Because that accumulation of wealth, millions of dollars, will be finished after this body is finished. After death, he cannot take away the millions of dollars with him next life. But they do not know
that there is next life. Next life he may become a dog. And what these millions of dollars will help you? That he does not know. Therefore, tapodibbam, take austerity penances for reviving your original consciousness, Krishna consciousness. For that purpose you undergo austerity. Otherwise, if you simply undergo austerities, penances, hardship for some material gain, then it is waste of time, defeat, parabhava. Parabhavastavat abodhujata. Because he is a full rascal, he does not know what part, hardship should be taken. Just like Hiranyakashipu, he also underwent tapasya. The whole universe became tremor. Brahma came, said, why you are undergoing such severe tapasya? On one finger he stood up and undergoing tapasya. And Brahma came. So what is your purpose of this tapasya? Sir, I want to be immortal. So that is not possible. You cannot become immortal. Then, in so many ways, he wanted to become immortal. What is the purpose of becoming immortal? There are many trees standing for 10,000s of years. That is very successful life, to stand in a place for 10,000s of years without any movement, or prolonging life for many thousands of years. Brahma lives also for many millions of years. So people are misled in this way. They undergo hardship for some temporary gain, which is condemned. Shastra says that if you take hardship, if you undergo tapasya, it must be for realization of God. Tapodibbam. That will give you permanent happiness. And if you accept hardship for anything material, it may give you temporary so-called happiness, but with the end of your body, everything will be finished. Therefore, this tapasini, this Gandhari, tapasini, she has been described as tapasini. She wanted to be a faithful, chaste wife. What is the result? If a woman becomes faithful, chaste wife, then the next life there is chance of her becoming a male. Because according to Vedic literature, to take birth as woman is low grade. Striya Sudra Tatha Vaishya Jepishu Papajonaya in the Bhagavad Gita. As there are higher grade and lower grade births, so according to Vedic understanding, the woman, the body of woman is lower grade birth. Therefore, if she is fortunate to have a good husband, devotee,
And if she becomes faithful to that husband, then her life is successful. That is called tapasya. Gandhari did it. Gandhari in India still, marriage does not take by canvassing all of a sudden. The father, mother, especially in aristocratic family, royal family, even in Western countries, the father, mother selects the husband or wife. Even in England, the King Edward VIII, he was intimately in friendship with a common girl, so the state would not allow him that you can marry a common girl. So at that time the Prime Minister was Mr. Baldwin. He said to him that either you have to give up the company of that common girl or you have to give up this empire. So out of sentiment, he gave up the empire. Later on he was very sorry. And his second brother, George VI, George VI means the father of the present Queen Elizabeth. So, still this is current in aristocratic family that the husband and wife should be selected by the parents. So Gandhari, she was the daughter of Afghanistan, Kandahar, still the name is there, Kandahar, Gandhar. Formerly the name was Gandhar. So Gandhari means the daughter of Gandhar country. So, when she was informed that her would-be husband is a blind man, Dhritarashtra was blind from birth. So, immediately she practiced austerity. Voluntarily, she closed her eyes with cloth, that she would also live as blind. My husband would be blind, so although I am not blind, I must live also as blind. This is the beginning of austerity, Gandhari. So Gandhari was so faithful, one of the most exalted chaste wife mentioned in the Shastras, Gandhari, that in all conditions she followed the husband. At last, when everything was finished in the battle of Kurukshetra, no Kaurava, none of the sons or grandsons of Dhritarashtra was living, neither of the Pandavas. Still, Gandhari was faithfully serving her husband, and Dhritarashtra was living with the nephews, Yudhishthir and his brothers. They were keeping the uncle very comfortably as elder uncle, all respect. But Vidur came there and he criticized him that you have no shame. You all along remained enemy to your nephews. Now your nephews have killed all your descendants and you are living here just like a dog. They are giving you some morsel of bread and you are eating and living here. You have no shame. You have become old. So he became very sorry. My dear brother, what shall I do?
please come immediately along with me and come to the forest. So Dhritarashtra went according to the instruction of Vidur. Gandhari followed. Gandhari never said that I am now old, I have lost my children, these nephews, they are taking care of me, where shall I go with my husband? No, she also went. So there are many good qualities in Mahabharata about Gandhari. Therefore she is described here as Tapaswini. Tapaswini. Very chaste, faithful wife, ideal wife. Gandhari, Tapaswini. What is the part really? Dhritarashtra and Gandhari, the father and mother of Duryodhana and his brothers, were the elder uncle and aunt of Maharaj Yudhishthir. After the battle of Kurukshetra, the celebrated couple, having lost all their sons and grandsons, were under the care of Maharaj Yudhishthir. They were passing their days in great agony over such heavy loss of life, and were practically living the life of ascetics. Because he was elder uncle, Yudhishthira Maharaj was coming in the morning to offer obeisances. And one morning when he came, he saw there is no Dhritarashtra and her aunt. He became very much disappointed because he was conscious that they were living in very aggrieved condition. So might be I have offended them, so therefore they have left my home. That is also you'll find. Then Narada came, they don't bother. They have gone to the forest to live as ascetic. Don't try to bring them back. Go on. The death news of Bhishma Deva, uncle of Dhritarashtra, was another great shock for the king and the queen, and therefore they required solace from Maharaj Yudhishthir. Maharaj Yudhishthir was conscious of his duty, and he at once hurried to the spot with Lord Krishna and satisfied the begrieved Dhritarashtra with kind words, both from himself and the Lord also. Gandhari was a powerful ascetic, although she was living the life of a faithful wife and kind mother. It is said that Gandhari also voluntarily closed her eyes because of the blindness of her husband. A wife's duty is to follow the husband cent per cent, and Gandhari was so true to her husband that she followed him even in his perpetual blindness. Therefore, in her actions, she was a great ascetic. Besides that, the shock which she suffered because of the wholesale killing of her 100 sons, and her grandsons also, was certainly too much for a woman. But she suffered all this just like an ascetic. Gandhari, although a woman, is no less... Ascetic means who voluntarily suffers all kinds of suffering. Titiksava, the exact word. Titiksava karunika, sridam sarvabhutana, ajata sattarva shanta sadhava sadhu bhusana. Sadhu means that he must be tolerant. Just like Haridas Thakur. You know how much tolerant he was. So titiksa. So titiksa is the qualification of a Brahman. Samadama titiksha, tolerant. You cannot expect any peaceful life in this material world. That is not possible. Therefore, in all conditions, in order to execute Krishna consciousness, we must be tolerant. Tang titikkasa bharat. Krishna advised to Arjuna that there will be some material pleasures and not pleasure, displeasures. So pleasure is also here, displeasure. They do not know.
So Krishna advised, Tang titikhasya bharat, agamopaina anitya, tang titikhasya bharat. These such things come and go. Don't bother much. Try to become tolerant and execute your own business. Similarly, we live together. There may be some inconvenience. You are brought up in a different standard in Europe and America, and in India it may be difficult because we haven't got all the facilities, but you learn tolerance, execute Krishna consciousness. That should be our business. Tang titikhasava matra sparshasta konteya शीतोष्ण सुख दुखदा agama apaina anitya tang titikhasya bharat. So, for life of austerity, Krishna consciousness life means the life of austerity, tapasya. It is not extravagance. So we have to learn titikha. That is one of the qualifications of the Brahman. Then, Gandhari, although a woman, is no less than Bhishma Deva in character. They are both remarkable personalities in the Mahabharata. that's all. Hare Krishna. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रवचन कहाँ पे हुआ था? ऑलरेडी किसी ने बोल दिया. सुधीर है ब्रो. हरे वाह. श्लोका नंबर क्या है? श्लोका नंबर यस सर 1948. हरि बोल. बिल्कुल सही आंसर. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ही एक प्रसंग का चर्चा कर रहे हैं और उसमें प्रभुपाद जी ने एक प्रोवर्ब कोट किया है कि मतलब एक कोई बंगाली कहावत है, तो कोई बताएंगे? केवल एक हाथ? ठीक है, दो हाथ जी, मतलब तो ठीक है, बट अगर कोई से विलास बंदा चलिए पहले इन्होंने उठाया, आपको नेक्स्ट टाइम गुरु जी को बताइए. तो जी वो बंगाली प्रोवर्ब था, आपनार धन बिलाए दिए भिक्षा मागे परेर खाचे. मतलब इसका अर्थ क्या है? कि अपना धन तो दे दिया भिक्षा में, डोनेशन में, अब खुद भिक्षा मांगना पड़ रहा है. हरि बोल. बिल्कुल सही आंसर. तो प्रभुपाद जी ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था? कोई कॉन्टेक्स्ट बता सकता है? हाँ तो बताइए. हाँ, जैसे भारत से लोग अपने भारत भूमि से लोग जब बाहर जाते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन हमारी भारत में हमारी भारतीय संस्कृति में सारी कुछ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सब इस सब छोड़ के कुछ धन के लिए लोग बाहर अमेरिका चले जाते हैं. ये इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं. हरि बोल. बिल्कुल सही. तो प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि दैट इज द डिफरेंस.
इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या डिफरेंस वाला जो स्पेशली वो लाइन अगर कोई एग्जैक्टली कोट कर पाए तो विष्णु प्रभु डिफरेंस कल्चर है प्रभु, जी। कल्चर। कल्चर, हाँ वो तो है, बट थोड़ा प्रभु जी बोले थे कि ये डिफरेंस है। हाँ, अद्वैत कृष्ण बोल रहे थे। इसमें कृपा बोल रहे थे, आई एम नॉट कमिंग हियर फॉर बेगिंग, आई एम कमिंग हियर फॉर गिविंग समथिंग। और प्रभु जी बोली आई शैल रिमेन श्योर। एंड यू शैल रिमेन। अरे और बिल्कुल सही। प्रभुपाद जी ड्रेस के बारे में भी कुछ बोले थे इस कॉन्टेक्स्ट में, विलास पंदा प्रभु। तो पाजी बोल रहे थे कि ड्रेस जो है, मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, आई एम ऑलवेज अ गिवर। तो मैंने जो है ड्रेस लोगों को दिया, वैदिक ड्रेस जो मैं पहनता था। और ड्रेस से रिलेटेड बोल रहे थे कि रामकृष्ण मिशन के लोग उनको बोल रहे थे कि आप कोट पैंट पहनिए, तो प्रभुपाद जी नहीं पहने। और प्रभुपाद जी ने सारे विदेशी लोगों को भी धोती कुर्ता पहने। अरे और बिल्कुल सही। तो आगे फिर तपस्या के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो उसमें एक श्लोक कोट कर दे जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है। श्रेयस प्रभु। अयम देहो देह भाजान में लोके कष्टान कामान अवैध विद्युजाम तपो दिव्यम पुत्रका इन सत्वम यस्मात् पुत्रे स्वतंत्र वनतम। अरे वो बिल्कुल सही। इसका क्या अर्थ क्या है? जो ह्यूमन लाइफ है उसको कुत्ते बिल्ली का विधान होनी चाहिए केवल भोग करने में। ये जो है तपस्या के लिए है ताकि हम आनंद सुख को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही। तो फिर आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, फ्रॉग का उदाहरण दे रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फ्रॉग में इस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने कुछ बोला है, तो स्पेशली प्रभुपाद जी ने एक वर्ड निकाला, वो लगभग 5 से 6 बार यूज किया प्रभुपाद जी। वो वर्ड को निकाल सकते? हाँ गोविंद नाम ब्रो। अच्छा प्रभु जी को दीजिए। हाँ क्या है एग्जैक्टली वर्ड निकालना है? नहीं निकाल सकते। कौन निकालेंगे? और विलास पन्ना निकालेंगे। प्रभुपाद जी ने पाजी बोल रहे थे ककर 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 का है ना, क कर का। तो प्रभुपाद जी ने इसको कई जगह यूज किया। तो फिर आगे बता रहे प्रभुपाद जी कि तो ये जो है ह्यूमन लाइफ एक चांस है। तो कैसे इसको प्रभुपाद जी कैसे बता रहे हैं? इसमें डिफरेंस बता रहे हैं। एक वैसे तो फ्रॉग भी जो है ककर का निकालते हैं, हमें भी बोलने की टेंडेंसी है, बट देन स्टिल डिफरेंस है। अब जी गोपाल हरि प्रभु को देखिए। तो डिफरेंस ये है कि हम लोग बातें करते हैं लेकिन हमें उस समय थोड़ा जोर से आवाज। उस समय हमें ऑस्ट्रिटी करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। ये नहीं कि हम भी बात करते हैं बात करते हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फ्रॉग्स दे हैवंट गॉट द चांस, दे कैन नॉट चैंट हरे कृष्णा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड माई सेल्फ। सो सिमिलरली if we waste our time in that kakarka, then we are no better than frog. We are no better than frog. थैंक यू, बिल्कुल सही। तो तपस्या का पर्पस क्या है यहाँ पे आगे बता रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ तपस्या। अच्छा माता जी को दीजिए। कृष्णा प्रभु जी, वॉलेंटरीली कुछ डिफिकल्टीज एक्सेप्ट करके अपने आप को एलिवेट करना।
हाँ बिल्कुल सही। और अगर एक दो पॉइंट इसमें ऐड कर पाएंगे तो बिल्कुल सही आपने बोला। और एक माता जी को दीजिए इधर। सही है माता जी, बस थोड़ा सा इसमें और आगे पीछे कुछ प्रभुपाद जी ने कुछ और। हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू हरि बोल, बिल्कुल सही। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयर फॉर तपस्या ऑस्टेरिटी इज रिक्वायर्ड टू नलीफाई टू कॉन्ट्रैक्ट दिस कंडीशनल स्टेट ऑफ लिविंग। नाउ वी आर कंडीशनड जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सो वी आर कंडीशनड बाय दिस फोर प्रिंसिपल्स। तो इसको नलीफाई करने का के लिए जो है तपस्या रिक्वायर्ड है। थैंक यू। सो ठीक है, आगे फिर प्रोपा जी बता रहे हैं कि जो है कुछ असुर लोग भी तपस्या करते हैं। तो उसमें किनका उदाहरण दिए प्रभुपाद जी, है ना? बताइए आगे कौन उठाए थे? हाँ ये सॉरी, हिरण्यकश्यप का। तो क्या बताए थे, के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे प्रभुपाद कि कुछ असुर भी तपस्या करते हैं लेकिन उनका पर्पस होता है कुछ मटेरियल गेन को प्राप्त करना, भौतिक लाभ को प्राप्त करना, बट वो एक्चुअली टेम्परेरी है। और तपस्या का जो असली लक्ष्य है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि परमानेंट है। थैंक यू हरि बोल, बहुत अच्छा, थैंक यू हरे कृष्णा। तो आगे प्रभुपाद जी गंधारी का उदाहरण बता रहे हैं, मतलब शुरू से उन्हीं के ऊपर प्रभुपाद जी, ये प्रॉपर वचन ही उन्हीं के ऊपर है। तो गंधारी जो है किस तरह से वो एक चेस्ट लेडी है, तो क्या बताया इसके बारे में? एक वर्ड यूज की प्रभुपाद जी उनके लिए। यस बताइए, एक वर्ड भी यूज की गंधारी के लिए, तपस्विनी। यस, तो गांधारी को पता चला कि उनके हस्बैंड जो होंगे, जो होंगे, तो उन्होंने पहले ही अपने आगे पट्टी बांध दी ताकि वो अपने हस्बैंड को फॉलो कर सकें। हाँ हरि बोल, बिल्कुल सही, हरे कृष्णा। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि एक चेस्ट लेडी का क्या रिजल्ट मिलता है, इफ लेडी चेस्ट। ठीक है, माता जी बता, ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अगली लाइफ में मैन बनती है। हाँ नहीं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो है अगर इफ सी इज चेस्ट तो नेक्स्ट लाइफ में हमको, ठीक है। और तो गंधारी का फर्स्ट तपस्या क्या था, बिगिनिंग ऑफ तपस्या ऑलरेडी बता दिए, बट फिर भी प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज किए कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हर तपस्या। ठीक है, पुरोहित बता दिया ऑलरेडी, ये ऑलरेडी पुरोहित बता ही दिया, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन लिखा था। और ठीक है, विदुर ने क्या बताया, विदुर जी जब आए तो धृतराष्ट्र को उन्होंने क्या बताया, थोड़ा अगर वो पूरा मुझे को दे सकते हैं आदिनाथ प्रभु को। हाँ कृष्णा प्रभु जी, तो वो बोल रहे थे कि आप कुत्ते की तरह रह रहे हो अपने नेफ्यूज के साथ, जो आपके बच्चों को मारे हैं, फिर यहाँ पे टुकड़ों पे आपको ब्रेड डाल रहे हैं, आप वो खा रहे हो। हरि बोल, बिल्कुल सही। तो धृतराष्ट्र को आके विदुर जी पूरा जो है डांटे, और ठीक है समय हो गया, तो प्रभु जी को। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी है, इनकी तपस्या का प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्णन किया, और भीष्मदेव से भी उनकी तुलना की कि भीष्मदेव की तपस्या जैसी थी वैसी गांधारी की तपस्या थी। तो भीष्मदेव ने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया और गांधारी ने अपने पति के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। तो भीष्मदेव अपने पिता शांतनु का विवाह करने के लिए जो सत्यवती, तो सत्यवती के पिता को उन्होंने वचन दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और भोगों के बीच में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया। तो भीष्मदेव की जो तपस्या थी वो कम नहीं थी, और गांधारी की तपस्या भी कम नहीं थी, क्योंकि जैसे उन्होंने सुना कि उनके पति जो है
अंधे हैं, तो विवाह के पहले से ही उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और जीवन भर वो जो है अंधी जैसी बनी रही। तो ये इनकी तपस्या थी। और जब धृतराष्ट्र रुके हुए थे महल में और युधिष्ठिर और बाकी 4 पांडवों की सेवा स्वीकार कर रहे थे, तो धृतराष्ट्र की तो ये निंदा की बात थी। धृतराष्ट्र के लिए तो निंदा की बात थी कि धृतराष्ट्र जो है कुत्तों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जिन पांडवों को उन्होंने मार डालने का प्रयास किया, आग में जलाने का प्रयास किया और उनका जो है वनवास दिया, और उन्हीं का ही जो दिए हुए टुकड़े अब जो है खा रहे हैं जिन्होंने उनके 100 पुत्रों का वध कर दिया है। तो धृतराष्ट्र के लिए तो निंदा की बात है, लेकिन गांधारी के लिए निंदा की बात नहीं है। गांधारी अपने पति की सेवा में फिर भी महल में हो या वन में हो, गांधारी के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। तो गांधारी के लिए कोई निंदा की बात नहीं, गांधारी के लिए कोई निंदा की बात नहीं थी कि वो जो है महल में रह रहे हैं। उनके लिए महल और जंगल एक ही है, अपने पति की सेवा में थी। तो गांधारी की तपस्या बहुत जो है मतलब ऊंची है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अंतर है भीष्म जी की, भीष्म जी के जो है भावना में और गांधारी की भावना में। भीष्म जी महाभागवत हैं, गांधारी नहीं है। भीष्म जी जो है 12 महाभागवतों में से एक हैं, गांधारी नहीं है। गांधारी अभी यहाँ पर वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में आए और सांत्वना दे रहे हैं धृतराष्ट्र और गांधारी को। तो भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में वर्णन है कि गांधारी ने उस समय जो है बड़ा कोप किया। तो 5 पांडव जो है गांधारी के सामने से जो है दूर हो गए और कृष्ण के पीछे खड़े हो गए। तो गांधारी जो है उस समय अपने आंखों की पट्टी खोलेगी और अपनी जो है कुपित नजरों से देखेगी तो बड़ा विनाश होगा। तो श्री कृष्ण जो है सबसे आगे खड़े हैं और गांधारी के जो है कोप दृष्टि से बचने के लिए 5 पांडव कृष्ण के पीछे खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन में, जिससे कि कृष्ण की ओट में खड़े होने के लिए। और कृष्ण को कोई डर नहीं, कृष्ण जो है परमेश्वर है। और गांधारी ने कृष्ण को देखा तो कृष्ण के ऊपर ही कुपित हो गई। कृष्ण तुम जो है इस युद्ध को रुकवा सकते थे, नहीं तुमने युद्ध को नहीं रुकवाया, तुमने युद्ध करवाया और इतना जो है विनाश करवाया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि 36 साल के बाद तुम्हारे वंश में भी जो है इसी प्रकार से आपसी कलह होगा और नष्ट हो जाएगा, पूरा तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारे श्राप के कारण नहीं, ये मेरी इच्छा से होगा, ये तो मेरी इच्छा से होगा है, तुम्हारे श्राप का कोई अर्थ नहीं है। और जो मेरे वंश का विनाश होगा तो और कोई कर भी नहीं सकता, संसारी कोई शक्ति नहीं विनाश करने की। मेरा वंश का जो है जिस प्रकार से विनाश होगा या वो जो है परम धाम में जाएंगे सब यादव, तो इसमें जो है तुम्हारे श्राप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम जो श्राप दे रहे हो अपनी तपस्या को नष्ट कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम अपनी तपस्या को नष्ट कर रहे हो मुझे श्राप दे करके। तुम सोचो कि तुमने दुर्योधन को अपना अगुआ बनाया, क्या सही था? दुर्योधन को तुम्हें कैद करना चाहिए था, दुर्योधन को तुम्हें बंदी बनाना चाहिए था और पांडवों को सौंप देना चाहिए था। तुमने अधर्म जो चल रहा है, धर्म पर चल रहा था, उस दुर्योधन को तुमने अगुआ बनाया और तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब गांधारी जो है चुप हुई और लज्जित हुई। तो अंतर है, भीष्म जी महाभागवत हैं और कोई व्यक्ति कितनी भी तपस्या करे और कृष्ण की निंदा करता है कि ये युद्ध जो है मतलब कृष्ण ने कराया, कृष्ण को जो है बड़ा इसमें दोष लगा, तो उसकी सब तपस्या खत्म। कोई भी बहुत बड़े बड़े तपस्वी हो उनकी सब तपस्या नष्ट हो जाती। जैसे वो थे एक मुनि थे जिनके आश्रम में भगवान गए थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, तो उत्तंक मुनि के आश्रम में भगवान गए और उनको भी सूचना दी कि इस प्रकार से वहां भारत युद्ध हुआ। उत्तंक मुनि भी इस प्रकार से बोले कृष्ण मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुमने इतना बड़ा विनाश करा दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम जो है अपनी तपस्या को क्यों नष्ट कर रहे हैं?
मैं पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, विनाश करने वाला हूँ। और तुमको पता नहीं है कि ये जो जितना जितना विनाश हुआ है, इन सबको अच्छी गति प्राप्त हुई है। तुमको कुछ पता नहीं है, तुम अपनी तपस्या को नष्ट कर रहे हो। उनकी भी बहुत बड़ी गुरु भक्ति थी, गुरु के बहुत बड़े भक्त थे उत्तंग मुनि। भगवान ने कहा अपनी तपस्या नष्ट कर रहे हो। तब उत्तंग मुनि ने क्षमा मांगी। जैसे जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े तपस्वी माने जाते हैं, चाहे जैन समाज के, जैन बहुत तपस्वी, बहुत तपस्या का जीवन उनका भी, लेकिन कृष्ण की निंदा करते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया, है ना। तो वो सब जो है अपनी तपस्या नष्ट करते हैं, सब लोग अपनी तपस्या नष्ट करते हैं। अर्जुन ने गीता में जब भगवान से पूछा तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो घोर कर्म, अर्जुन भी सोच रहे घोर कर्म है, तो वो जो है अर्जुन का अज्ञान तो भगवान ने दूर किया। लेकिन कोई भी अज्ञान हो इस तरह से तो अपना अज्ञान दूर करो। जैसे ने अपना अज्ञान दूर किया कि ये घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे, भगवान कहते हैं घोर कर्म नहीं है, जिस किसी कर्म से जो है तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हारा घोर कर्म बनेगा, तब तुम्हारा पाप कर्म बनेगा। तो गीता में अर्जुन ने जिस तरह से जो है भगवान से प्रश्न किया, इस प्रकार से किसी व्यक्ति के मन में अगर संदेह है तो उसको प्रश्न करके अपना संदेह दूर करना चाहिए कि ये उल्टी बातें बोले कि वो कृष्ण ने जो युद्ध कराया और ये जो है उन्होंने पाप किया, इतना जो है संहार कराया ना। तो भगवान तो आते ही हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और पृथ्वी को भार महसूस हो रहा था तो भगवान आए, पृथ्वी का भार उतारा और पृथ्वी को राहत मिली। और कोई अगर तुम्हारे जैसा मूर्ख है, अगर उसको शिकायत होती है तो इसका क्या महत्व क्या है तुम्हारे, हैं? तुम्हें जो शिकायत होती है इसका तुम महत्व क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है तो तुमको शिकायत हो रही है। भूमेर भारावतारा नाम, तो पृथ्वी का जो है भार उतारने के लिए भगवान आए हैं। भगवान का कार्य ही है कि पृथ्वी का भार उतारे ना। परित्राणा साधु नाम बिना साचलिस्तान, ये सब चीजें हैं कि गांधारी के अंदर जो अज्ञान था ना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है ना। और भीष्म जी के पास कितना ज्ञान, भीष्म जी जो है भगवान जो है गुणगान करते हैं, वंदना करते हैं और अंत्यकाल में स्मरण करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति जो है, भक्ति में अगर आप तपस्या करते हैं तब तो कुछ उसका गुण होगा। भक्ति के बिना आप तपस्या करते हैं और फिर जो है जो भी तपस्या होती है भक्ति की बिना होती है वो सब क्या होती है, नष्ट हो जाएगी। समझते नहीं कोई, तो यहाँ पर यही समझना चाहिए हमको कि गांधारी हैं तो बहुत तपस्वी नहीं, परंतु भीष्म जी से उनकी तुलना तपस्या में तो की जा सकती है, लेकिन वो जो भक्ति की विशेषता है भीष्म जी में वो गांधारी में नहीं है। तो बस यही है कि भगवान ने उनको भी लज्जित कर दिया, चुप हो गई, है ना। तो फिर और आगे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो इस तरह से उनकी भी रक्षा हो गई तो भगवान ने स्वयं जो है उनको जो है लज्जित कर दिया। यही होता है कि हमें जो है लज्जित करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर इस तरह से किसी वैष्णव की निंदा करता है, कुछ करता है या भगवान की निंदा करता है तो उसको हमें लज्जित कर देना चाहिए, उसको डांट देना चाहिए, कठोर शब्दों में बोलना चाहिए, है ना। इसी में उसकी रक्षा होगी। तो ये जो है मतलब विशेष जो है ये कर्तव्य है हम लोगों का कि ऐसी बातों को जो है हमें कड़ा उत्तर देना चाहिए। लेकिन वैसे क्या है कि गांधारी की तपस्या का बहुत सम्मान किया जाता है कि तपस्या है गांधारी की, लेकिन यही भी है गांधारी ने अपने पति के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन अब ये संभव नहीं है किसी स्त्री के लिए गांधारी की तरह वो तपस्या करे, तपस्वी बने। और साथ साथ ये भी है कि इस समय के जो पति हैं वो उतने योग्य हैं भी नहीं कि जो स्त्री है वो अपने पति की सेवा करके उसको जो है मतलब कल्याण होगा। क्योंकि भगवान भागवतम में बताते हैं कि जो पातकी नहीं, जो पापी नहीं है, पति स्त्री बिन हातव्यो लोके जरूर पातकी। अगर पति पापी नहीं है तब तो पति की सेवा करके उसको अच्छी गति मिलेगी। पति अगर पाप कर्म में लगा है तो फिर वो नहीं है कि भाई
पति की सेवा करे उसका कल्याण होगा, है ना। तो पति अगर पाप में लगा हुआ है तो वो जो है अपने पति के पापों में सहयोग ना दे। इस प्रकार से पति का त्याग करना चाहिए कि पति के पापों में सहयोग न दे। जैसे कि वाल्मीकि मुनि के उसमें कथा में आता है कि उन्होंने कहा कि हम जितना भी पाप कर रहे हैं, तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं, तो तुम पापों में हिस्सा करो। तो पत्नी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे पापों में सहयोग नहीं दूंगी, है ना। तो ये है भाई, कोई भी स्त्री है तो साफ कह दे, तुम जो पाप कर रहे हो इस पाप में जो है मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बटाऊंगी। तो इस तरह से पति का त्याग किया जाता है। पति का शारीरिक त्याग तो नहीं हो सकता कि भाई शरीर से त्याग कर दे तो कहाँ जाएगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, और उसके चरित्र की भी रक्षा कैसे होगी। तो पति का त्याग तो नहीं कर सकती, परंतु उसको जो है साफ कह दे कि मैं तुम्हारे इन पापों में सहयोग नहीं दूंगी। लेकिन वो भी नहीं कह सकता, अगर वो कहेगी तो फिर कलह होगा। तो इसका मतलब है चुप रहे और थोड़ा दूरी बना के रहे, झगड़ा ना हो किसी प्रकार से, और उस यथासंभव उसके पाप कार्यों में सहयोग ना दे। सहयोग देना पड़ता है तो क्या करे, करना पड़ेगा, लेकिन वो जो है उसकी मजबूरी होती है, उसकी जो है वो अपनी इच्छा नहीं होती है। इस तरह से भगवान की भक्ति, अब तो स्त्रियों के लिए भगवान की भक्ति ही है, क्योंकि पति रक्षा नहीं करने वाले। तो पहले ये था कि भाई पति की सेवा से ही उसको पूरा फल मिल जाएगा और कोई गुरु की जरूरत नहीं है। स्त्री के लिए बताया गया कि पति की सेवा करे, पति की भक्ति करे, तो उसको और किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय कलयुग में अगर पति भी जो है अगर पाप कर्म में लगा हुआ है तो सबके लिए, अब सबके लिए वही विधि है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको जो है गुरु धारण करना होता है, दीक्षा लेना होता है और शिक्षा लेना होता है और सत्संग करना होता है। नहीं तो पत्नियों के लिए कोई सत्संग नहीं, स्त्रियों के लिए कोई सत्संग नहीं। तो पहले के युगों में जो पति होते थे तो धर्म का पालन करते थे, तो पत्नी जो है धर्म का पूरा जो है फल ले लेती थी वो पति की सेवा करके। तो सत्संग की कोई व्यवस्था स्त्रियों के लिए होती नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि जब स्त्रियों को जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, कि वो जो है समाज में इधर उधर जाती हैं और अपना इच्छा पूर्वक जो है किसी से मिलती हैं, तो वो उसका आज़ादी का जो है फायदा उठाएं सत्संग के लिए, इस्कॉन के कार्यक्रम में भाग लें। अब स्त्रियों के लिए वो रास्ता नहीं है कि गांधारी की तरह चले। अब तो स्त्रियों के लिए भी और चाहे पुरुष के लिए समान अधिकार अगर दिया जाता है आज के, हालांकि वो अज्ञान है, परंतु समान अधिकार दिया जाता है तो समान अधिकार का फायदा उठाएं स्त्रियां भी। और स्त्रियां भी जो है मंदिर में आएं और कथा सुने और प्रवचन करें और प्रचार करें, हैं। तो ये सब कार्यक्रम जो है अब पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए सबके लिए समान है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।